Hello. Yes, good evening and the warmest of warm welcome to match number 35. Team Ace Charges to my left, the captain, Gaurang Karakasia to my right, a captain who's got a swag in his walk, courtesy those 6 wins out of 6 matches. So they are on a high. The only unbeaten team in the tournament, that's the Team Challengers. And if they can keep going like that, they're going to be creating history. Toss time, we have with us our co-convener Sububhai, Captain Abhay and Vinay Surana in all readiness. It's going to be Gawa to please take the call. Toss time. Tails is a call and it lands heads. Team Challengers, y'all are not just winning matches, y'all are winning tosses as well. So making things difficult for the opponents. What's your call? And obviously, you want to be keeping up that winning momentum. जो भी कुछ कहना है आपको कहना है अब. We will be batting because the last match we will try that we'll be fielding in that match. But so we will be batting now. We got a good batting side and. We will try to. We are planning to give our bench a chance to have a good knock. So that's it. Team Challengers have won the toss, and like the earlier match, they have decided to bat first. Gaurang, you are at a position which nobody thought you all will be at this stage of the tournament. Happens when a bad day in the tournament, So yes, you will be wanting to regain some lost pride, and maybe that golden plate championship is in your mind, maybe. Definitely yes. There is a chance, provided we win this match. And yes, it was a bad season, and we can say, but lot many takeaways from this particular season, not only to me but to all my other players also. So that we have to improve on those mistakes and kindly come back very hard next year. Yes, being at the top, winning the Open League Championship and being at this position. So Team Ace Chargers have seen the ups and downs. Anyway, I'm sure that Gaurang Karakasi and his team will come out in all readiness for this match. Enjoy the game, come out and express yourself. Requesting Kaushik Bhai Mehta to please come for the rest of the toss ceremony. May I request both the teams to please come together for the team snap. We have with us Cricket Committee Chairman and Governing Council Member Kaushik Bhai Mehta. Captain Cool Hemant Moite mentioned that quite a few players on the bench are going to be getting their chance tonight. They have a very good team. And the reserve bench strength is going to be put to test tonight. As Hemant Moite said, quite a few new players are going to be having a chance. One with a thumbs up. Ganapati Bappa. राष्ट्रगान को सलामी देते हैं. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Bharat Mata Ki Vande. Thank you. Yes, the news from the center is Team Challengers have won the toss and they've decided to bat first. Looks like a few new faces will get a chance to be a part of the playing 11 tonight for Team Challengers. As he mentioned, Captain Hemant Moite, that they're going to be testing the reserve bench strength. On the other hand,
Gaurang Karakasia mentioned that they want to be qualifying for the Golden Plate Championship, so they got to win this match. It's a do or die situation anyways for the Ace Chargers. See you with the live action at 7 p.m. on the dot. Thank you. Welcome to Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Cricket, tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं खुद पे विश्वास करो.
Welcome to Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Be it cricket, tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं, खुद पे विश्वास करो.
Welcome to Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Be it cricket, tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं, खुद पे विश्वास करो.
Vanakkam. A very good evening and the warmest welcome to match number 35. Team Ace Chargers have been invited to bowl first. Hemant Moite winning the toss and opting to bat first. As the opening pair, we have with us one of the co-owners of the team, that's Jonty Parekh, and to give him company, it's Yogesh Kotak. The only team to have that 100% winning ratio in the tournament, 6 wins out of 6. That is exemplary. That's an extraordinary feat. Hemant Moite mentioned that tonight they will be giving a few chances to their reserve players. They will be shuffling the batting order. Quite a new faces will get their first chance tonight. Ajay Lat, one of the most premier new ball bowlers at the senior GSC cricket, is going to be bowling from the infinity end. Lights, camera, action. Let's lock and roll. The first delivery, quite a good one in the business area and equally well played by Jonty. Nicely leaning into that shot. Amit Parekh is somebody who likes to go by the book. He's got his chance. Now this is the golden opportunity to make a statement out here. Let's see how he goes about things. More than anything else, his attitude and approach will be the things that we want to be watching. Those two important dynamics will set up his game for Amit Parekh. YK. Jagdish Bisawa at deep covers. We have sort of created history by bowling that first delivery before 7 p.m. 7 बजे के पहले वो पहली गेंद आज हुई है पहली बार जीएससी के इतिहास में. अच्छी बात है. फुल टॉस गेंद है लेकिन थोड़ी सी वॉबल हो रही थी, हवा में लहरा रही थी थोड़ी सी वो गेंद. क्या खूब खेला है टीम चैलेंजर्स ने. 6 में से 6 मैचेस जीतकर इस पॉइंट्स टेबल पर सर्वोत्तम स्थान हासिल किया है. Yesterday what we witnessed was the best match of the tournament so far and one of the best matches ever in the history of GSC 45 plus cricket. Gangsters really cooked up a storm, but in the end, superstars holding on to their titanium nerves to go past the winning post. कल की मैच में दोनों ही टीम्स के ओपनर्स ने क्या आला प्रदर्शन किया. टीम सुपरस्टार्स के सलामी बल्लेबाजों ने प्रशांत देसाई और मुनीर ने 85 रन्स की पार्टनरशिप की. इस टूर्नामेंट में 102 रनों की हाईएस्ट पार्टनरशिप थी. दूसरे इनिंग्स में टीम गैंगस्टर्स के ओपनिंग बैटर्स ने 107 रनों की पार्टनरशिप बना के इतिहास रचा. That's a good line to be bowling into, putting the ball in that corridor of uncertainty outside the off stump. Good hands. What a shot. That is YK for you. Room on offer and he went after it. The kind of form that he's been in, it's not going to be sparing those loose deliveries. Ajay Lat knows that he made a mistake and he's had to pay a penalty with the rhythm mobiles boundary. Up and away is Yogesh. We found a Casio watch. Looks like
किसी बच्चे की ये घड़ी है. So anybody who's lost it might just come out here and collect it from the com box. A Casio watch. थोड़ा सा जल्दी खेला, थोड़ी सी गेंद हवा में थी, लेकिन नियंत्रण में नजर आए अमित पारेख. गेंदबाजी का भार संभाले हुए नई गेंद के साथ इन्फिनिटी एंड की तरफ से नई गेंद को शेयर करते हुए प्रज्ञेश शाह. अच्छी गेंद, ये अच्छी लाइन है. क्रैम्प किया योगेश को, लेकिन योगेश ने भी सटीक तरीके से उस गेंद को नेगोशिएट किया. डेड बैट से न खेलते हुए थोड़ा सा बल्ले को अड़ाया, 1 रन प्राप्त किया. स्ट्राइक वापस जॉन्टी पारेख के पास. आखिरी वक्त पर थोड़े से बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए मोड़ना चाहता, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट दिशा में मिस कर गए. प्रज्ञेश की लाइन और लेंथ बहुत ही सटीक है. अच्छी शुरुआत हासिल हुई है प्रज्ञेश को. थोड़ा सा रूम दिया था, ज्यादा जोर से शॉट मारने का प्रयास न करते हुए केवल दिशा दी. 2 रनों की उपलब्धि होती हुई अमित पारेख को और टीम चैलेंजर्स को रन संख्या 11 रन, जबकि दूसरे पीसीपीएल ओवर की 2 गेंद आनी शेष है. Into the stumps. With that kind of pace, you want to make sure that you put the ball into that length area. Wicket to wicket is what you want to be bowling. And at the moment, he's doing a decent job here, Pragnesh. Early days in his spell, but that's a good start. Getting some good bounce as well. That must have landed perfectly on the seam. End of over number 2. The scoreline is 11 for none. Team Ace Chargers at the bottom of the table. Team Challengers right at the top. The number 1 position, 6 wins out of 6. Team Ace Chargers 1 win out of 7. Ace Chargers were the Ace Chargers were the champion team of the Open League. Well bowled. Well played. Now Yogesh has to be greedy for more runs. When you are in form, you want to be accumulating as many as you can. Just look at the opening batters of quite a few other teams. The opening pair for Team Challengers has been brilliant in the form of Yogesh Kotak and Rajesh Gadgil. The opening pair of Team Oh, that is almost in the block or well bowled. You have to be greedy for runs all the time.
He always does get some late movement, and it's all about the seam presentation. The stock delivery from Ajay Lat is the one that leaves the batsman just a wee bit. The right-handed batsman. He's got a very good high action. He's getting the ball to move away from the right-handed batsman. Last year as a opening bowling pair, Ajay Lat and Mukhtar Sheikh were one of the best opening bowling duos in the tournament. This year both the players are playing for different teams. Thickish inside edge. The ball will run away into that Rhythm Mobiles boundary fence. Unintentional, but welcome Rhythm Mobiles boundary to the credit of team challengers. Ajay Lat hasn't exactly taken the world by storm at this GSC 45 plus. He's been decent at the best, but he's a much better bowler than what is exhibited in this season. He's a much better bowler than what we have seen from him this season. Not done. That is one more Rhythm Mobiles boundary. Look, Yogesh Kotak had made a mistake, half measures. Fortunately, the ball falling a little short of the man in the deep. Yogesh Kotak is somebody who always employs the full measures. Fortunately, that half-measured shot did not land anywhere near the fielder, or else he would have been on his way back to the pavilion. In the end, he collects quite an important Rhythm Mobiles boundary. Score at the end of 3 PCPL overs, that's 21 for none. Into the pads, a half-hearted appeal. The Mool mantra for Yogesh Kotak will be to play those 36 balls. How many runs he scores is not important. How long he stays at the wicket, that is more paramount. How long he stays at the wicket. Nicely played. The assignment from Hemant Mohit and the think tank for Yogesh Kotak is to play those 36 balls.
Yogesh Kotuk is the kind of a player who's got that X factor around him. When he's in the field, we know that he's got a knack for picking up brilliant catches, stunning catches. Oh, that was too wide. Somebody as good as GK cannot get around it. Rhythm Mobile's boundary. Team Ace Chargers have to stop that leakage of big runs. They got to cut that pipeline. Early days in this match. Lots and lots of cricket still left to come. End of 4 PCPL overs. 29 for none. Pragnesh has looked really good. The intent from Pragnesh was spot on, bowling with a run-up of only 4 to 5 yards, but more often than not, he's put the ball in the right areas. Things have not gone Ace Chargers' way. We got to accept it. It's not been such a good season for them, a very ordinary season. Happens once in a while. The last year, end of last year, they were the champions of the Open League tournament, which is supposed to be the most biggest stage for the GSC cricket. The GSC T20 League. Ace Chargers was the winning team, the champion team, and they did it on debut. Till the time you put in that good effort, nothing else should matter. When you go back home after a match, you got to be at peace with yourself that yes, I have put in my best effort. I was not casual. I wasn't lethargic. I put in my best effort. Nothing else matters. 30 for none. It's a good start. We have with us Avinash Mayankar. He played an absolute gem yesterday, 60 runs in less than 36 balls. That was a super knock from Avinash. Avinash Mayankar's partner in crime, his opening partner, that's Ashish Goel. They notched up the highest opening partnership at the GSC 45 plus cricket, not just in this tournament, but in the history of GSC 45 plus. That was the highest opening partnership. Nicely turned around the corner. That's such a minimum effort and a premium result. That's the first Rhythm Mobile's boundary off the blade of Amit Parekh. The job for Amit Parekh is to play that anchor role. He's got his opportunity at last, and he has been given the license by the think tank to play his own game, to take his time, just make sure that he keeps rotating the strike, and so far, still early days, but you got to give it to Amit for that good start. Now that has to be capitalized on.
Dr. Chitrang Thakur in that point area. He could be introduced into the bowling attack anytime. Oh, he gets the desired elevation. We'll have to wait and watch. The ball falls behind Narayan Sharma, and a good backup job done. Is it Vikas Kasat in the long on position? Yes, it is the only man to have those black sleeves. Welcome to the magician, Anil Duggar and Alpesh Shah. What a pot boiler of a match yesterday. What a fantastic over bowl by Manish Sharma, the last one of the match and the first for Manish Sharma in yesterday's match. He was spot on. Karan Singh Walia was left high and dry at the other end on 47. 47 not out. He was playing brilliantly. $39 for none. A business-like start here for Team Challengers after opting to bat first. One of the better spells from Pragnesh. The ball is nicely coming out of his hands. You can make it out. You can make it out that he is in good rhythm. It's nice to see players like Pragnesh Shah stepping up. The ball was always going to be falling behind the man inside the circle, and one more crisp rhythm mobiles boundary, just playing it with the movement, just helping it on its way. Was a little uppish, but that was intentional. Quite a smart rhythm mobiles boundary to the credit of Jonty Parekh. The score on to 43 for none. ओ ज्यादा दूर नहीं थी वो गेंद अजय लाड से। 6-7 साल पहले शायद अजय लाड उस कैच को ले लेते, कोशिश कर लेते। 2 रनों की उपलब्धि, रन संख्या जहां पहुंचती है 45 रनों पर। आखिरी गेंद आनी बाकी है पीसीपीएल पावर प्ले में। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी की प्रज्ञेश ने। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, 45 रन बने बिना कोई नुकसान के। बहुत ही अच्छी शुरुआत।
was talking to Veer Sarvaiya, the corner of the team, before the match, and he seemed quite positive, relaxed. He said, होता है कभी कभी प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन आज ये सीजन में क्लिक नहीं कर पाए. नेवर माइंड, बोलते अगली साल और ज्यादा मेहनत करेंगे. तो ये होता है ओनर्स का काम, अपनी टीम को प्रोत्साहित करते रहे, नेगेटिव माहौल न बनाए अपनी टीम कैंप में. राजेश महाजन, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. शुरुआत तो अच्छी है, हमेशा आके यहां पर मैचेस देखते चलिए. आज पहली बार उनका नाम मुझे पता चला है. रिदम मोबाइल्स बाउंड्री. राजेश महाजन ने केवल इस बात की खबरदारी लेनी होगी कि रूम ना दे, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करे, अपने दायरे में रहकर अपने स्पेल को अच्छे ढांचे में सजाए. स्वागत है सुनील देवली का, नंबर 333 जर्सी. बढ़िया फॉर्म में है, एक रोल मॉडल है सभी प्लेयर्स के लिए सुनील देवली. फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी गोरेगांव स्पोर्ट्स 45 प्लस सीजन 7 की उनके नाम दर्ज है सुनील देवली के. इस बीच हमारे गुरुवर्य कुलदीप सिंह बरात सर का स्वागत है. 50 runs up on the board with all wickets in hand, more than anybody else in the camp of Team Challengers. Jonty Parekh will be the most happiest man. That's a good start. Team Challengers are playing like a champion team. Jagdish Bisawa could have really come up with a better effort. Rhythm Mobiles boundary. कुलदीप सर, कल के मैच में दोनों ही पावर प्ले ओवर्स में विकेट नहीं गिरा. आज तीसरी बार लगातार ऐसा ही होता हुआ. तो ओपनर्स वाकई में हर लिहाज से अपनी गेम को बिल्कुल टाइट करते हुए आज अमित पारेख को ओपनिंग करने का मौका मिला और अभी तक काफी सम्मानजनक प्रदर्शन अमित पारेख ने भी किया है. बढ़िया शुरुआत टीम चैलेंजर्स के लिए. राजेश महाजन भी अपनी गेंदबाजी पर काफी मेहनत कर रहे हैं. कम मौके मिले हैं महाजन को. थोड़ी सी फ्लैटर डिलीवरी और दूसरा रन बड़ी आसानी से उपलब्ध होगा. नारायण शर्मा ने दौड़ लगाई है. तीसरा रन थ्रो के लिए बिल्कुल आएगा. योगेश कोटक काफी फिट है और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स को हमेशा दर्शाते हैं. इस बीच प्रमोद जी गुप्ता का आगमन हुआ है. स्वागत है प्रमोद जी गुप्ता का. अट्ठावन रन बन चुके हैं बिना कोई नुकसान के. अल्पेश ने अपनी जगह बनाई है. दोनों ही शानदार बल्लेबाजों के बीच वो थोड़ा सा, अगर वो टैलेंट बैटिंग फॉर्म आ जाए उनमें तो बेहतर होगा. आ सकता है, क्यों नहीं. 7 पीसीपीएल ओवर्स के बाद रन संख्या है 58 रन बिना कोई नुकसान के. फिर से एक बार एक बहुत ही दर्जेदार शुरुआत. हेमंत मोहिते ने फरमाया था कि हम थोड़े से नए प्लेयर्स को चांस देंगे, हमारी बेंच स्ट्रेंथ को आज हम आजमाएंगे. बहुत ही बढ़िया शुरुआत है. देखिए, जब कैंप में माहौल सकारात्मक होता है तो हर प्लेयर, चाहे फिर वो एक्स्ट्रा प्लेयर क्यों ना हो, वो बिल्कुल अपने आपे में आ जाता है, उजागर हो जाता है. टीम चैलेंजर्स को रोकना मुश्किल होगा. डॉक्टर चित्रांग ठाकर की आजमाइश होती हुई इन्फिनिटी एन की तरफ से. That is such a judicious start there for Amit Parekh. He's on to
26 of 24 balls. Well done. Well ball. That is such a good delivery. फ्लाइट में बीट किया क्योंकि वो गेंद अमित पारेख की आई लेवल के ऊपर से वो आई नीचे, कश्मकश में डाला कि आगे खेले या पीछे खेले. बढ़िया गेंद. पहले सीम गेंदबाजी करते थे, अब स्पिनर के रूप में बेहतर नजर आ रहे हैं एज अ स्पिनर. छोटी सी गेंद, देखिए छोटी सी गेंद प्रहार किया. पहली दो गेंद कितनी अच्छी थी. जैसे मौका मिला प्रहार किया अमित पारेख ने और रिदम मोबाइल्स चौका अपने नाम किया. इसी तरह की साधारण गेंदों को अपने आर्मरी में से, अपने स्पेल में से निकाल फेंकना होगा, क्योंकि किसी भी तरह से मार्जिन फॉर एरर नहीं है दोस्तों. पोटेंशियल बहुत है चित्रांग में, नजर आता है वो पोटेंशियल. Growing in confidence, growing in stature. See, this is exactly what you call grabbing the opportunity with both hands. मौका मिला है आज ओपनिंग करने का, धर पकड़ लिए उस मौके को दोनों हाथों से. $64. बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद. रिदम मोबाइल्स बाउंड्री ऑफ द बैट वहां पर घोषित किया है, लेकिन फ्लाइट में बीट हुए थे. गेंद बहुत ही बढ़िया थी. इस तरह के चौके के साथ डिस्करेज नहीं होना चाहिए चित्रांग ने. मॉरल विक्ट्री तो थी बिल्कुल चित्रांग के लिए. ही कॉट योगेश कोटक ऑन द रॉन्ग फुट. मैच का नतीजा कुछ भी हो, हेमंत मोहिते ने काफी शुरुआत में एक अच्छा पॉजिटिव कलेक्ट कर लिया है अमित पारेख के बैटिंग फॉर्म के माध्यम से. इज ऑलरेडी कलेक्टेड अ पॉजिटिव. YK has played only 20 balls. He's on to 34. Mind-blowing effort. Of 18 balls, he scored 34. With the help of 6 boundaries, so he should not settle for anything less than a half century after this kind of a start. घोर अपराध होगा अगर अपनी विकेट को गिफ्ट करते तो ऐसे हालात में. अच्छी गेंद पर आउट होते तो कोई नहीं, लेकिन अगर अपनी विकेट अगर सौगात के रूप में देते इस चार्जर्स के लिए तो फिर वो घोर अपराध होगा. 8 पीसीपीएल ओवर्स के बाद 68 रन बने बिना कोई नुकसान के. क्या शानदार तरीके से सभी टीम्स के, ज्यादातर सभी टीम्स के ओपनर्स कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करते हुए. डीजे की आजमाइश होती हुई. धनंजय पांचाल, जो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के स्थान पर है पॉइंट्स टेबल पे, वो चाहते कि नंबर 2 पे जाए. पहले स्थान पर जाने से तो रहे, सुनिश्चित हो चुका है टीम चैलेंजर्स का स्पॉट वहां पर. जो भी जद्दोजहद होगी, जो मेहनत मशक्कत होगी, वो
नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और शायद नंबर 5 पर जो टीम है वो भी एक आखिरी कोशिश कर लेगी। नंबर 5 की टीम 3 या 4 पर आना चाहेगी। 2, 3, 4 की जो टीम से वो नंबर 2 पर आने की पूरी कोशिश करेंगे। और टीम सुपरस्टार्स कल जो उस टाइट मैच को जीता वो काफी मददगार होगी। वो जीत नंबर 2 के स्थान पर पहुंचने के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है कल वाली वो जीत। 72 रन्स बने हैं। डीजे जैसे भी कितने अच्छे प्लेयर्स है जो मेहनत कर रहे हैं। ये अच्छे प्लेयर्स है इस वजह से, और बहुत अच्छे प्लेयर्स की कैटेगरी है। ये अच्छे प्लेयर्स की कैटेगरी नहीं होती तो बहुत अच्छे प्लेयर्स की कैटेगरी बन ही नहीं पाती। क्या शानदार रवैया इख्तियार किया है आज अमित पारेख ने, खुलकर खेल रहे। और एक बढ़िया रिदम मोबाइल्स बाउंड्री। शुक्रिया अदा करते हमारे टाइटल स्पॉन्सर लक्ष्मी लीला ग्रुप, प्रवीण कोठारी वेंचर का, जेनसन एलईडी लाइट्स, गंदा रॉयल रिफाइनरी, पीसीपीएल, कंफर्ट ग्रुप और रिदम मोबाइल्स। बिल्कुल सेट हो चुके, बिल्कुल रिलैक्स्ड है। करीबन हर गेंद पर जवाबी कार्रवाई के रूप में एक आक्रामक शॉट खेलने की काबिलियत रखते अमित, इतने सेट हो चुके हैं। 9 पीसीपीएल ओवर्स के बाद 77 रन्स बने हैं बिना कोई नुकसान के। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स एंड इंटरवल होगा। दोनों ही टीम्स की थिंक टैंक आपस में आएगी और एक नई साजिश बनाएंगे, एक नई रणनीति को बनाएंगे। आखिरी 3 ओवर्स में 32 रन से टीम चैलेंजर्स ने जोड़े हैं, तो पावर प्ले के पश्चात उस मोमेंटम को बिल्ड करते हुए डॉक्टर चित्रांग डॉक्टर चित्रांग एक इम्प्लांट सर्जन है, टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, प्रिसिशन के साथ अपनी सर्जरीज को अंजाम देते हैं। उसी तरह की प्रिसिशन को अपने क्रिकेट में भी लाना चाहते हुए मेहनत कर रहे हैं। He does not take his place for granted. He puts in that hard work. All of them do, and that is why we have such a good standard at the GSC 45 plus. Two dot balls. If collected around 80 runs without having lost a wicket in the first 10 overs, obviously the next 10 overs you want at least 100 to be accumulated. That should be the mantra. पहले 10 में 80 runs बिना कोई विकेट के। लूज गेंद देखिए, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी पर काम करना होगा। डॉट गेंद के बाद वो लूज गेंद की सौगात दे दी। रिदम मोबाइल्स चौका। वो केवल ये चीज इनकंसिस्टेंसी जो नजर आ रही है वो फिटनेस को लेकर है, ठीक तरह से उनका बॉडी वार्म अप नहीं हुआ है। 45 प्लस क्रिकेटर्स के लिए अपनी गेम को एक लेवल ऊपर ले जाना चुनौतीपूर्ण होता है, आसान नहीं होता है। Oh, what a delivery, good one. That was angled into the stumps. He offered the full face of the bat. That turn took the ball away from the probing bat of Yogesh. Anybody who can bowl that kind of a delivery has got to have some potential, isn't it?
Desperate times for Chitrang Thakur. 86 over that boundary. What a fantastic platform they've laid, a rock solid foundation. टीम चैलेंजर्स ने अपने क्रिकेट के साथ सभी को मंत्र मुग्ध किया. They've mesmerized everybody, one and all. They're going through a purple patch. They're in the pink of form. $87 is what they have scored at the end of 10 PCPL overs. The most important thing, the figure 0 in that wickets column. Yogesh Kotak has 44 of 27 balls and Amit Parekh is on to 40 of 33. What a mind-blowing partnership. Great going, guys. Time for a break. 40 minutes, सबसे फास्ट. कल 43 मिनटों में गैंगस्टर्स ने अपने 10 ओवर्स किए थे. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अजीत चौहान सर, आज 40 मिनटों में. क्या बात है, क्या बात है. Welcome to Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Cricket, tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं, खुद पे विश्वास करो.
Welcome back. Now, what's the message from the think tank of Team Challengers? So, what's the revised target that they have in mind? Amit Parekh is going to be playing his last ball. Mission accomplished. A job well done. End of the knock from Amit Parekh. Well played. He will be more than happy, and so will be the camp of Team Challengers with that kind of a performance. This is exactly what you call grabbing the opportunity with both hands, making it count. You got to be ready whenever that call comes up. You have to be ready for it. Retired out, although I'll have to take the sponsor's name. Jensen LED Lights, Ganda Royal Refinery wicket. Rajesh Gadgil is at the number 3 spot. (29 balls, 46 for Yogesh. GK has come into bowl. Kya baat hai? After the likes of Hemant Mohiti, Amol Polke, now GK has taken the ball in his hands. GK to bowl from the in-orbit end. Starts off with the wide. We have the corner of team Ace Chargers with us, Veer Sarvaiya, and also the warmest welcome to Ankur Ratan. He's a diehard fan of Ace Chargers. That's better. Rajesh Gadgil, such a pleasing sight to watch. A very correct player, like he's almost on that similar line to Avinash Mahinkar. Oh, that's a good connection. And will it be the half century for YK? It is the half century to YK with that Rhythm Mobiles boundary. Commit the hour, commit the man. The showman has got one more half century to his name. Well done, well done. ये योगेश कोटक का ये करिश्मा है. एक्स फैक्टर प्लेयर है YK. हमारे साथ आशीष गोयल के जूनियर यहां पर है, उनके चिरंजीव. आशीष भाई, वो क्रिकेट खेलते हैं क्या? फुटबॉल खेलते हैं? क्या बात है. कॉम्बो कुछ समझ में नहीं आया क्रिकेट और फुटबॉल का. होता है.
One more stellar performance from YK. One more big contribution. He's got to just keep working on that same form. He's just got to continue in the same vein. इसी थॉट प्रोसेस को जारी रखना होगा. जब कभी क्रिकेट मैच में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तब इसी माइंडसेट को आजमाना है, इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है. I am watching a Gaurang bowl for the first time. Making use of the pace generated by Gaurang. He was off the target and he's had to pay a penalty with a rhythm mobiles boundary. That boundary is to the blade of Rajesh Gadgil. Rajesh Gadgil up and away with that boundary. 100 runs up on the board in quick time. यतीश, आज की ओपनिंग पार्टनरशिप कितने की थी? 90 की. क्या बात है. लगातार सब मैचेस में जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप देखने को मिलती हुई. हवा यात्रा पर गई निकली है गगनचुंबी शॉट. अजय लाट ने उस कैच को लिया है. बढ़िया कैच, बहुत ही बढ़िया कैच. जिस तरह के कैचेस लेने में माहिर है राजेश गाडगिल, उसी तरह के अच्छे कैच ने राजेश गाडगिल को पेविलियन का रास्ता बताया है. बढ़िया कैच अजय लाट का. जेनसन एलईडी लाइट्स, गंदा रॉयल रिफाइनरी विकेट. क्रीज से दामन छूटा है राजेश गाडगिल का और आगमन होता हुआ श्रीनाथ पई का. श्रीनाथ पई एक अलग जोन में है. गए साल उनका डेब्यू हुआ था, अपने आप के लिए अच्छी रेपुटेशन बनाई और इस साल उस रेपुटेशन को और ज्यादा मजबूत करते हुए the best part about this GSC 45 plus event is the openers of most of the teams. The openers are providing some substance at the start here. We have with us a very good senior cricketer Rakesh Bhai Mehta from Kandivali. He plays for the West Zone 50 plus cricket team, the Hometex ICWC team. Welcome to Mr. Rakesh Mehta. Rakesh Bhai, this is the 45 plus event at the GSC, the signature event. That's nicely steered. What a way to get off the mark. That's quite a confident start. Will Srinath Pai able to exhibit the same kind of form that is consistently exhibited in this tournament? One of the top batters, that's Srinath Pai. It's all about your mental strength. It's all about your state of mind. Nothing else matters. 103 for 2 at the end of 12 overs. I'm sure that they might be thinking about 190 plus. They might be even thinking of going past the 200 run mark. The other day, Sunil Devli scored the fastest 50 and in the bargain his team scored the highest score of the tournament, 226. Pragnesh comes back for his second spell.
Nitin Ganatra has donned the wicket-keeping gloves now. Nitin Ganatra is not that new to the wicket-keeping role. He's kept wickets for quite a few teams. He knows a thing or two about wicket-keeping. DJ. डीजे के लिए कश्मकश ये थी कि कब डाइव मार रहे, वो कश्मकश में वो गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई। तो रिदम मोबाइल्स चौका 22 के रूप में स्वागत हार्य रन्स। टीम पैंथर किंग्स के कोनर प्रदीप दंदानिया का आगमन होता हुआ स्वागत है। Dazzling form. Ajay Lat in that area in the tee. 107. Everything is falling in place for team challenges. Cross-batted shot, that's high in the air, and that will go past the two men on the boundary ropes, and it goes over the ropes. That's a comfort group 6. YK with that 6 moves on to 57 of 32 balls. What a night this is turning out to be for Yogesh Kotak. वो कुछ स्पेशल चीज है योगेश में जो हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते, वो एक्स फैक्टर है। दोनों ही योगेश फॉर्म में है टीम चैलेंजर्स के लिए, योगेश कोटक और योगेश शर्मा। जीके का स्पेल बरकरार रहेगा। बड़ा नाम, बहुत ही बड़ा नाम है जीके, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है गौरांग कराकासिया। A very sporty player, very sporty player. ऑरेंज कैप गैंगस्टर्स के कोनर कप्तान करण सिंह वालिया के सर पे सच दच के संवरती हुई कल की शाम वो ऑरेंज कैप उनके सर पे गई। 294 रन्स। पर्पल कैप के हकदार है योगेश शर्मा। तो ये ऑरेंज कैप और पर्पल कैप होल्डर्स है। अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू। Back to GK. The final 2 balls for YK. GK to YK. मिस कर गए, थोड़ी सी जल्दबाजी की। आखिरी गेंद खेलेंगे YK।
60 रन्स बनना जरूरी है। क्या खूब बल्ला बोला है योगेश कोटक का आज की शाम। कंसिस्टेंटली अच्छे परफॉर्मेंसेस को दर्ज करते हुए वाईके 61 रन्स बनाए अपनी 36 निर्धारित गेंदों में। सभी को फिर से एक बार मंत्रमुग्ध करके पेविलियन में वापस आते हुए जेंसन एलईडी लाइट्स गंदा रॉयल डिफेंडर विकेट, क्योंकि शोमैन है एक दो पोजिस तो देंगे वाईके की तरफ से ही, हम वो आशा कर सकते हैं। क्रीज से दामन छूटता हुआ वाईके का आगमन होता हुआ साकेत अधिकारी का। साकेत अधिकारी ये अधिकार रखते हैं डंके की चोट पर कह सकते हैं जीएससी सीनियर क्रिकेट को कि मैं भी यहां पर बिलोंग करता हूं। आई एम नॉट गोइंग अवे एनीवेयर, आई एम नॉट एनीवेयर क्लोज टू माई शेल्फ डेट। व्हाट ब्रिलियंट फॉर्म साकेत अधिकारी हैज बीन इन, he's been in silken touch. पहले मैच में 60 रन्स बनाए, फिर 33, फिर 25, फिर 60 और गए मैच में केवल एक ब्लिप 8 रन्स बनाए। मैंने थोड़ा रिवर्स स्टैंडिंग घोषित किया, 8 रन से शुरू किया, गए मैच में 60 रन्स बने थे, 2 मैन ऑफ द मैच के खिताब उनके नाम है। डंके की चोट पे परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट में साकेत अधिकारी ने, पूरी तरह से अपने चट्टान जैसे अनुभव का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए बड़े योगदान लगातार दिए अपनी टीम के लिए। इट्स प्लेड लाइक अ बिग प्लेयर, बिग टिकट प्लेयर, बिग मैच प्लेयर। शरद is yet to bat, हेमंत मोहिते, परमिंदर सिंह बामरा, पी रामचंद्रन, सिद्धार्थ, मनीष, विजय सिंह, योगेश शर्मा, प्रमोद कश्यप, हेमांग पंडित। The ownership camp of team challengers, Hemang Pandit, Hemant Mohite, Amit Parik and Vijay Jha. That's the ownership camp of team challengers. So thank you to all the 4 co-owners. On the other hand, team ace charges, Vir Sarvaiya and Gaurav Yadav. Terrific shot, breaking the shackles with that comfort group 6. Well and truly and quite comfortably over the head of the man in the deep for a blazing comfort group 6. With that 6, the score on to 127. One more shot is the same kind of a shot, the same kind of an elevation and even a better result. That's an absolute stunning comfort group 6. He got stuck into that one. Stand and deliver. Minimum effort and the most premium result. That is a Srinath Pai for all of us. He's taking on DJ. स्वागत है पैडी का।
श्रीनाथ पै को आगे की तरफ गेंद परोसना यानी कि कयामत को न्योता देने जैसा है, अपनी गर्दन को वो तलवार की नोक पर रखने जैसा है। श्रीनाथ पै को आगे की तरफ गेंदबाजी करना। टाइमिंग साधारण थी। 134 रन्स बने हैं। 15वें ओवर की एक गेंद बाकी है। श्रीनाथ पै ने जिस तरह से अब अपने बल्ले को खोला है, मेरे ख्याल में साकेत अधिकारी अपना नेचुरल गेम 1-2 ओवर्स तक खेलेंगे और फिर उनके तरफ से भी आतिशबाजी देखने को मिलेगी। 15 पीसीपीएल ओवर्स के बाद 135 रन 3 विकेट के नुकसान पर फिर से एक बार हमारे फिजियोथेरेपी पार्टनर डॉक्टर विदिका जुठानी वी वेदा क्लिनिक से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, कौशिक मेहता की तरफ से जो हमारे क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन है और गवर्निंग काउंसिल मेंबर है गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के। बिग थैंक यू टू वी वेदा क्लिनिक। हमारे एसोसिएट स्पॉन्सर्स जेंसन एलईडी लाइट्स, गंदा रॉयल रिफाइनरी, रिदम मोबाइल्स, पीसीपीएल और कंफर्ट ग्रुप। थैंक यू टू आवर टाइटल स्पॉन्सर लक्ष्मी लीला ग्रुप, प्रवीण कोठारी वेंचर। स्वागत है कैप्टन कूल अमोल पोलके का। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का भी एक अहम हिस्सा है अमोल पोलके। 67 मिनटों का समय लिया है अपने 15 ओवर्स मुकम्मल करने में। वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर का खिताब जिन्हें हासिल है, जीतू गुप्ता का आगमन होता हुआ। जितेंद्र गुप्ता हमारे जीसी मेंबर, आईटी डिपार्टमेंट के हेड है। गत 2 साल के सबसे इंप्रूव्ड प्लेयर्स करण सिंह वालिया, जीतू सिंह और असलम भाई। व्हाट अ शॉट। गलती के लिए गुंजाइश ही नहीं है और ये सबसे बेहतर कौन जानेगा, गौरांग कराकासिया से बेहतर कोई नहीं जान सकता इस बात को। रिदम मोबाइल चौका। बल्लेबाजों की बात करें तो श्रीनाथ पै, आलोक सोमानी, आनंद संगाई, साकेत अधिकारी, गौतम पारेख, अमोल पोलके, गौरांग कराकासिया, दिस आर द टॉप बैटर्स। Shikopal Jaju unfortunately fractured and cannot play this tournament. What? जगदीश बिसावा नहीं रोक पाएंगे, गेंद चीरती हुई निकली और एक रिदम मोबाइल से चौका। गौरांग कराकासिया की पेस का इस्तेमाल करते हुए टाइमिंग और प्लेसमेंट स्पॉट ऑन। जिस तरह के फॉर्म में है साकेत, इस तरह की लूज गेंदों को नहीं बख्शेंगे, प्रहार करेंगे। ही विल गो फॉर द किल। 143। थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था। बहुत ही बड़ा नाम है जीके, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की भट्टी से पक कर निकले हैं जीके। वेल बोल्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है जो गौरांग क्रिकेट फील्ड पे नहीं हासिल कर सकता। मल्टी डायमेंशनल प्लेयर कहते हैं इसे। Overreaching. The final ball left in over number 16.
GK is into his third over. The last ball left is given away 120. He's given away 26. ओवर की समाप्ति नहीं हुई है क्योंकि ये वाइड गेंद है. वो कोविड के समय जो सलाइवा बैन किया था वो बैन अब उठ चुका है. द सलाइवा कैन बी यूज्ड नाउ एंड वो स्टार्ट हुआ है आईपीएल से. एंड मोहम्मद सिराज इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मैन. इज गॉट हिज फॉर्म बैक. कुलदीप सर वो कोविड के दिन याद ही नहीं करने चाहिए. ऐसा लग रहा था कि वो अपने फैमिली मेंबर्स में कोविड का नाम रेशनिंग कार्ड में ऐड करना पड़ेगा. भाग्यशाली है कि नाउ इट्स ओवर. कोविड के वक्त वो सलाइवा को बैन किया था यूज करने से, लेकिन अब वापस उस बैन को उठा लिया. इफ आई एम नॉट रॉन्ग आकाश, आईपीएल में ये रूल उठ चुका है और सबसे ज्यादा फायदा अभी तक अगर किसी को हुआ है तो वो मोहम्मद सिराज है. नारायण शर्मा की अब आजमाइश होती हुई इन्फिनिटी एंड की तरफ से. ये भी बड़ा नाम है, नेक बंदा है नारायण शर्मा. देखिए इस तरह के बड़े मंच पे टीम के हर नुमाइंदे ने अपनी भूमिका को अदा करना होता है. हर प्लेयर के लिए एक विशिष्ट भूमिका अदा करने के लिए कहा गया है. Each and everybody has been assigned a role. Playing the game of cricket is like playing in a symphony. वो सिम्फनी में 70-80 म्यूजिशियंस होते हैं और जब वो 70-80 म्यूजिशियंस एक साथ अपने काम को अंजाम देते तब वो मैजिक क्रिएट होता है. और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस सिम्फनी का तब होता है जब वो मैजिक क्रिएट होता है. और वो मैजिक का तब होता है जब वो 70-80 म्यूजिशियंस एक साथ अपनी नोट को सही मायने में पकड़ते हैं. उसी लिहाज से क्रिकेट फील्ड में भी सभी 11 के 11 को अपनी भूमिका को सटीक तरीके से अदा करना होता है. तब वो मैजिक क्रिएट होता है जो टीम चैलेंजर्स ने बखूबी किया है. So far, Team Challengers has been the team that has played like a cohesive unit most perfectly. Terrific hitting, lusty hitting. Srinath Pai getting stuck into that one. Oh my word, that's an extraordinary shot. Just look at the timing and connection, effortless. He's at the top of his game, 150 plus on the board, such a biggie. Comfort Group 6. Welcome to one of our key members, that's Amit Mehrotra from Keyland Developers. देखते देखते पई 14 में 23 रन तक जा पहुंचे हैं. थोड़ा सा ड्रामा शायद उनके जहन में ऐसा प्रतीत हुआ होगा, शायद एक्चुअली कि नारायण शर्मा ने थोड़ी सी बिलेटेड अपील को पेश किया. इस टूर्नामेंट की सबसे अहम बात जो पेशकश हुई है सभी ओपनर्स की तरफ से, मन लुभाने वाली पेशकश. अजय लाट को वहीं पर तैनात किया है उसी तरह के शॉट को रोकने के लिए. हमारे जीएससी का ये मैदान इतना बड़ा नहीं है, तो अगर ठीक तरह से टाइम में करोगे अपने एलिवेटेड शॉट्स को तो ज्यादातर वो गेंद ग्राउंड के बाहर जाएगी. ओवर की समाप्ति.
17 ओवर्स के बाद 154 रन बने, 18 गेंदबाजी बाकी, वो 190 रन उनके जहन में होंगे। साकेत अधिकारी और श्रीनाथ पै दो आक्रामक बल्लेबाज है, वो 190 के उस पार जाना चाहेगी ये टीम किसी भी हाल में। इस मैच को मॉनिटर करने के लिए शुरुआत से ही हमारे को कन्वीनर, हमारे सीनियर सदस्य सुबू भाई हमारे साथ है, कैप्टन अभय वैद्य और विनय सुराना। सुबू भाई और विनय सुराना नहीं खेलते, विनय कभी कभी खेल लेता है, सुबू भाई तो नहीं खेलते, उसके बावजूद बड़ी शिद्दत से अपने काम को अंजाम देते हैं सुबू भाई। A little overreaching, अगर स्टेप आउट ना करते that would have been a rank half volley, थोड़ा सा ओवर रीच किया। एक अलग दबदबा है साकेत का, अलग शानो शौकत है। क्या बैटिंग लाइनअप के धनी है चैलेंजर्स, जबरदस्त। फील्डिंग सम्मानजनक की है, इस चार्जर्स ने अच्छी फील्डिंग की है, इंटेंट अच्छा दिखाया है। Oh, what a shot! Terrific shot, as straight as an arrow, literally. That would have been a sure shot boundary. .4 overs, 158. Gaurang into his last over. 2 balls left. Too wide. Oh, what a blow. What a blow. One bounce into the boundary ropes. Stellar show from both these batters. What a way to end GK's over. He was looking reasonable in this over. The last ball of the over being put away for Rhythm Mobile's boundary. Score after 18 PCPL overs. Ladies and gentlemen, boys and girls, that's 163. Saket is on to 19 of 15 and Srinath is on to 26 of 17. So nothing to worry about their quota. They just got to keep going. Narayan Sharma now into the attack. परमिंदर भामरा इज लुकिंग रिलैक्स्ड क्योंकि टीम अच्छी स्थिति में है और एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस टीम चैलेंजर्स का। बड़ा मीनिंगफुल रवैया रखा है इस पूरे टूर्नामेंट में। साकेत अधिकारी निकल पड़े हैं, पहला रन बड़ी तेज रफ्तार से लिया था। 165 बने हैं, 11 गेंद शेष है। 165 मंसूबा है 185 के उस पार जाए, क्या कामयाबी मिलेगी वो देखना होगा। बिल्कुल उजागर होकर बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज अब
क्या बात है जी के याद दिलाते हुए कि मैं विदाउट विकेट कीपिंग ग्लोव्स भी कैचेस को लपक सकता हूं। सॉफ्ट डिसमिसल श्रीनाथ पै के लिए, सॉफ्ट डिसमिसल, और एक अच्छी इनिंग्स को अंजाम दिया, एक अच्छा योगदान दिया, अच्छा समय बिताया विकेट पर, अच्छे फॉर्म में नजर आए, तो अ जॉब वेल डन। टीम भी काफी खुश होगी। ये जरूरी था कि श्रीनाथ पै कुछ अच्छा समय विकेट पे बिताए। हर मैच में इसी फॉर्म को बरकरार रखेंगे, इसी सोच के साथ आगे के मैचेस में भी बल्लेबाजी करेंगे। जेंसन एलईडी लाइट्स, गंदा रॉयल रिफाइनरी विकेट। नारायण शर्मा के हाथों सफलता लगती हुई। And it's Parag. He's got no other options but to go for the kill, to play shots. The strike back with Sakit. Now Sakit will have to do the bulk of the scoring. He'll have to keep the lion's share of the strike to him. The second run on the cards, there is no doubt about it. There is nothing in the world that can stop both those batters from going across for that second run. 168 it is. 7 balls left. Oh, what a connection. Super connection. Is it a flat six or a boundary? Rhythm Mobile's a boundary, crashing into the boundary fence. That was in his range. He will not spare you. That is easy stuff. Easy pickings for the well set Sakit Adhikari. Rhythm Mobile's a boundary to end the 19th over. The score on to 172. कम से कम वो 185 चाहेंगे आखिरी 6 गेंदों में। वो आखिरी 6 गेंदों की जिम्मेवारी किसे मिलेगी? प्रतीक फिर से एक बार इस टूर्नामेंट में दूसरी या तीसरी बार वो आखिरी ओवर की जिम्मेवारी उनके मजबूत कंधों पर आई है। शायद मानसिक तरीके से तैयार भी है कि मुझे वो आखिरी ओवर मिलेगी। प्रतीक पारिक, Rhythm Mobile's boundary. That boundary comes off the blade of Paraksha, just what they wanted. 176 with 5 balls left. 176 with 5 balls left. In fact, Team Ace Chargers have done well in the last 3 to 4 overs to kind of put the brakes on. But this last over is very important. They have to be the most disciplined in this over. Not easy with Pratik bowling. They have to give it their best shot. 5 balls left. बहुत ही ज्यादा वाइड, 1 रन का इजाफा। 177 बने हैं, 5 गेंद बाकी है।
डॉट गेंद, सर हवा में था, जल्दी खेल लिया अपने शॉट को, लाइन में नहीं आए। 4 गेंद बाकी है। Oh, what a delivery. That's a ripper. एक सौ 78 रन, 2 गेंद शेष है। द फाइनल 2 बॉल्स एंड ये दोनों ही गेंद शायद मंशा यही होगी कि दोनों साकेत खेले दोनों ही गेंदों को। चलिए, और एक अच्छा कैच अजय लाट का, दूसरा कैच लिया इस मैच में, साकेत अधिकारी को चलता किया है। अजय लाट का अच्छा योगदान, 2 कैचेस आउटफील्ड में, अच्छे कैचेस। सेकेंड अटेम्प्ट पे उस कैच को लिया, अच्छा शॉट था साकेत का। आखिरी गेंद, चलिए 185 तो बनने से रहे, 190 तो छोड़ो, 185 भी बनने से रहे। इन आखिरी लम्हों में अच्छा प्रदर्शन किया इस चार्जर्स ने। Siddharth, the new man in. Last ball. अच्छी कीपिंग गणात्रा की, क्या बात है। आखिरी लम्हों में अनुशासन से गेंदबाजी की। इस मैच को जीतने के लिए 179 बनाने होंगे टीम चैलेंजर्स ने। वेल प्लेड, और आखिरी लम्हों में बांधे रखा है। टीम एस चार्जर्स के पास भी बड़ा मौका है। दिलचस्प सेकेंड हाफ होगा। मिलते हैं मिड इनिंग्स ब्रेक के बाद। 89 मिनट्स में खत्म किए हैं अपने 20 ओवर्स को, क्या बात है। वी गोना बी स्टार्टिंग एट क्वार्टर टू 9। क्वार्टर टू 9 को शुरू करेंगे कुलदीप सर, कहीं पर भी मत जाइएगा।
Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Be it cricket, tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं, खुद पे विश्वास करो.
Welcome to Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Be it cricket, tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं, खुद पे विश्वास करो.
yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Welcome to Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Cricket,
tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं खुद पे विश्वास करो.
Welcome back. Narayan Sharma, the man on strike, and Pragnesh the non-striking, and the new ball in the hands of Pramod Kashyap. Play time. Nicely getting behind the line of that delivery and also on the top of the bounce. Got to be very careful with your running between the wickets. A very fine senior seam bowler, Pramod Kashyap. .179 is the target. Steering the ball into that point area. The first runs on the board for Pragnesh as well. Both the batsmen off the mark. They will not mind the pace being generated by Pramod Kashyap. The last 2-3 innings have been very good for Narayan Sharma, and he will be looking to one more time make a good statement here. Amongst the better seam bowlers at the senior GSC cricket, that's Pramod Kashyap. So well played. Making use of the pace from Pramod Kashyap, putting it into the vacant backward of square leg area for the first rhythm mobiles boundary of the second half of this match number 34. That comes off the blade of Pragnesh. The modern day bats, they are so good that thickish edge will take the ball out of the ground. That's the thing about the modern day bats. Is bowling the back of length deliveries into the right-handed batters looking to cramp them. End of the first over from Pramod Kashyap. The scoreline is 8 for none. That first over, we saw the first rhythm mobiles boundary of the run chase. Pawan Agarwala, as always, to be bowling with the new ball, showing the new ball with Pramod Kashyap. That is straight to Pai. A daunting ask for the batting lineup of Team Ace Chargers, but not an impossible one. That's a very difficult shot to be playing, but he timed it well.
That darted in big time and getting the bat down in time. Narayan Sharma, thickish edge, inside edge. Parminder Bamra in that square leg area. He's a lone ranger in that area. That goes straight to him. Pawan will have to be careful with this line. You do not want the ball to be drifting into the pads. The kind of field that has been set for Pawan that will warrant Pawan to be bowling on and around that off stump. Only 3 men on the leg side. So the line obviously has to be outside the off stump. Half-hearted shout, but a good delivery. No harm done. One final ball left in the second PCPL over. Welcome to Vipul Kalyani, Jitu Mandot, Shetty Anna. Clean bowled him. Pawan Agarwala picks up the big fish. On his way back to the pavilion is Narayan Sharma, and in comes Vikas Kasat. Jensen LED Lights, Gandha Royal Refinery wicket. Quite an early bird to the credit of Team Challengers. Ample time for Vikas to set up his game. For the next 8 to 10 minutes, there is no need for him to think about the daunting target. He needs to set up his own game. He needs to spend some time at the wicket. He had a good outing in the very first match of the tournament. After that, he's been a little cold. Pramod Kashyap, it's going to be bowling to Pragnesh. Over number 3 getting underway. The third PCPL over. They already have an early bird to their name, Team Challengers. Wicket to wicket bowling. The back of length delivery nicely negotiated by Pragnesh. That was a very tidy spell for him. And now with the bat, he will be looking to play those 36 balls that have been allotted to him. Into the pads, the finger goes up. Coming back to the pavilion without having trouble the scorers. That was the quicker one
that was fired into the stumps. The bat not exactly in front of the pads, maybe adjacent to the pads, and that is where the ball sneaked in. And leg before wicket, the umpires having no problems to raise the finger. The second Jensen LED lights, Gandhar Oil Refinery wicket. In comes Dr. Chitrang Thakur. Missing out on an opportunity here, Vikas Kasat. He will be a little disappointed, but he will have to take that decision into his stride. In any case, that's a brilliant start for Team Challengers to their defense of 178 runs. That's quite an auspicious start. Chitranga comes into bat now, number 4 position. He loves his cricket and is very passionate about the game. Dr. Chitrang's daughter is here to check out on my pronunciations of the surname. Thakur it is. I wonder what happens to his patience when he's out here playing cricket. He's got all-round skills. Nicely leaning into that one, offering the full face of the bat. That kind of a push should give some tidy confidence to the batsman. The ball meeting the meatiest part of the blade. The ball hitting the middle of the bat. Pragnesh has got his own ways, but he can be so handy with the bat. The very unassuming Pragnesh, but he can bat and bowl. Oh, well played. That's a good intent. I mentioned in the first half that Yogesh Kotak has got a knack to pick up those blinders, turning catches. Maybe a better effort could have converted into a half chance. Those kind of opportunities come the way of Yogesh Kotak. End of 3 PCPL overs, that is 20 for 2. 2 Jensen LED lights, Gandhar Oil Refinery wickets. That was close. Maybe that would have gone crashing into the 5th stump. They are all pumped up, Team Challengers.
वो सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो चुका है टीम चैलेंजर्स में, क्योंकि वो दो टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को पेविलियन चलता किया है। पवन अग्रवाला और प्रमोद कश्यप ज्यादातर हर मैच में ये दोनों ने नई गेंद को संभाला है। In the block hole, almost nailing the Yorker. Welcome to Ravi Narayan Sahu. गति में परिवर्तन किया था, थोड़ी सी अपनी रफ्तार से गिरफ्तार करना चाहा था। दोनों ही गेंदबाज ने अपनी रिदम को प्राप्त कर लिया है। Too short. Oh, that's a soft dismissal. Pragnesh will have to take that dejected walk back to the pavilion. It's going to be a long walk. The well-directed short pitch delivery from Pavan Agarwala. No problems for Hemant Moite to grab that catch. Pragnesh on his way back. Jensen, LED Lights, Gandhar, Royal Refinery wicket. The three top batters back in the pavilion. In comes Sunil Butoria. Things once again going downhill for Ace Chargers. The teams that are in a secured position on the points table are the teams wherein the openers have consistently played well, and the open league player have come into bat at the number 3 spot immediately after the power play period. That team has been served well, and those teams are the teams that are amongst the top 4. The openers have given a good start, and that enables the open league players to come in and bat at the number 3 spot. और जो 4 टॉप टीम्स है, 4 या 5, उन पांचों ही टीम्स में नंबर 3 के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं वो ओपन लीग वाला प्लेयर। जिस टीम्स में वो पावर प्ले के बाद नंबर 4 या नंबर 5 के पोजीशन पे जब कभी ओपन लीग प्लेयर आए बल्लेबाजी करने के लिए, वो टीम्स पॉइंट्स टेबल के बॉटम हाफ में है। विकास नाराज है, थोड़ा सा मन बनाया था कि आज परफॉर्मेंस करूंगा, मिस कर गए। होता है क्रिकेट गेम में, इट्स अ क्रूअल गेम एट टाइम्स व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूअल गेम्स। बैट फॉर्म इज ऑलवेज राउंड द कॉर्नर वेटिंग टू पाउंस ऑन यू। द फैमिली एट कमरा, आई गेस्ड इट, द फैमिली इज ऑल्सो हियर। They were a little disappointed, but never mind. That's a good shot from Chitrang.
Till the time Vikas Kasad is playing the game even at this age, I think everybody in the family should be happy. So is the matter for all the 45 plus players. The thing is to keep going, to keep continuing with the game. Good hands from Sunil. One more very passionate cricketer. In spite of that, to major shoulder surgery is all game to play. In fact, they should not mind the pace of Pramod Kashyap. The slow bowlers are even more of a challenge on this kind of wickets. What a hand Yogesh Kotak played with the bat. A brilliant knock. A half century from his blade. 47 runs is what Amit Parekh scored. The openers once again on a roll. Good shot from Butoria. Rhythm Mobile's boundary played with such a good intent. Nothing to lose. Under no pressure. This is the time to go out and enjoy the cricket, but at the same time, you also got to make sure of those of that shot selection. Now they need to build a partnership here, Chitrang and Butoria. Sunil is on to 5 of 2 and Chitrang is on to 5 of 7. Early days. End of one more over from Pramod Kashyap. The score after 5 PCPL overs, 28 for 3. Big thank you to our title sponsor, Lakshmi Leela Group, Praveen Kothari Venture. The associate sponsors, Comfort Group, PCPL, Rhythm Mobiles, Ganda Oil Refinery, Jensen LED Lights. Physiotherapy partner, Dr. Vedika Jutani, Viveda Clinic, your advanced rehabilitation center, advanced physiotherapy on offer, the multi-equipped state-of-art Viveda Clinic, our physiotherapy partner. Pawan continues. The man on strike, that's Dr. Chitrang Thakur. Now he's got ample time on his hands to craft a good knock. He can play his own game. He can take his own time. Ideally, would be wanting to play those 36 balls. He's a bit of a stroke player. Good elevation, good timing, and that's a Comfort Group 6. Picking up the length of the delivery quite early. That's a confident looking Comfort Group 6 from the blade of Chitrang. The first ball of the over put away for the 6. Pawan will obviously be under some pressure. 34 for 3. The change in pace delivery, a good comeback one. Even after conceding that sixer, he's given away only 10 runs in his spell so far. He's picked up 2 wickets. Is into over number 3. और एक अच्छा शॉट, ये उनका पेट शॉट है. रिदम मोबाइल्स चौका. अप एंड अवे इस चित्रांग अपना आक्रामक रंग पेश करते हुए
किसी भी तरह से अपने स्वाभाविक खेल को खेलने से नहीं कतराते हुए लाइसेंस लेकर आए गोवा से, गौरांग कराकासिया से, कि मैं मेरा स्वाभाविक खेल खेलूंगा। सबसे मजबूत पक्ष चित्रांग की गेम का उनका पैशन है। थोड़ी सी फिटनेस पे अगर और ज्यादा काम करे तो ही कैन बी इवन मोर कंसिस्टेंट। The key thing is to be consistent, to take your game to the next level. And nobody can help yourself. The only man who can help yourself is yourself. Nobody else can help you. You got to be very disciplined. Every practice session, you got to make it count. You got to collect some positives after every practice session. गगनचुंबी शॉट ऊपर गई है, लंबी नहीं गई है, उसके बावजूद वो रिदम मोबाइल्स बाउंड्री की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा विस्फोटक अंदाज में इस इनिंग्स को आगे बढ़ाते हुए मानो के मन बना के आए कि बिल्कुल आक्रामक खेलूंगा। आज किसी भी तरह से कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है। ऑलराउंड स्किल्स है। हम हमेशा कहते हैं कि जो भी कुछ हमने चित्रांग ठाकर की तरफ से देखा है वो ऑलराउंड स्किल्स देखने को मिले हैं। संजना योगेश कोटक का स्वागत है। अच्छी गेंद, गेंद की लंबाई को थोड़ा सा खींचा और शायद उन्हें पता था कि वो थोड़ा सा स्टेप आउट कर जाएंगे। 2 चौके और एक छक्का उस ओवर में काफी महंगे साबित होते हुए पवन उस ओवर में। 6 पावर प्ले ओवर्स की समाप्ति के बाद 43 रन बने। 3 जेनसन एलईडी लाइट्स गंदा रॉयल रिफाइनरी विकेट्स के नुकसान पर। वेलकम टू श्रीवल्स। प्रैक्टिस सेशन में से आ रहे लगता है। कल मैच है अगेंस्ट टुमारो। मैच नंबर 36 is that's Panther Kings versus Warriors. They want to give their best version tomorrow against the Warriors. No less than the best version of Panther Kings will do the trick. In comes Parminder Bhamra. Not too much to do with the bat in this season, considering the batting form of the batting lineup of Team Challengers, but he's played his role as a bowler every match. Chitrang is on to 20 of 13 and Sunil is on to 5 of 3. Early days for both the batters, especially Sunil. Chitrang has got another 23 balls left in his quota. Can he play those full quota of 36 balls? If he does so, might as well be a half century to his name. That big knock is due from Chitrang. Parminder Bhamra is going to be a challenge with his slow off spinners, with his orthodox off spinners. Guru sir and Prashant Dubey sir, the 2 on-field umpires. Ajit Chavan sir, the 3rd umpire. Yatish and Raj, the 2 scorers. Akash in control of the console for promo productions.
Dhananjay and Sonu, the two cameramen, LED man. Thank you to the crew of the GSC 45 plus T20 event, bringing you the live pictures. That's Rishabh. चित्रांग वो दूसरा रन तब लेते जब वो सुनिश्चित होते, रिस्की सेकेंड रन नहीं लेना चाहेंगे इस तरह की मैच स्थिति में, जरूरत भी नहीं है। 45 रन बन चुके हैं। अच्छी गेंद, श्रीनाथ पै फिट प्लेयर है, अगर उस कैच को लेते तो किसी भी तरह से हम अचंभित न होते। इनफैक्ट वो ड्रॉप कैच है। श्रीनाथ पै जैसे फील्डर के लिए हमारे वो स्कोर शीट में ड्रॉप कैच के नाते वो वाकया दर्ज होगा। काफी अंदर आई वो गेंद, देखिए स्लो टर्न इस वक्त मिलता हुआ परमिंदर को। फ्लाइटेड गेंद, वाईके को आम को चांस नहीं लेंगे। रनआउट यानी कि घोर अपराध होगा। इस तरह की स्थिति में रनआउट यानी कि फांसी की सजा मिलेगी। Amit Desai not playing this match. वो रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह से है। Is injured, yes. पहली ओवर में 5 रन दिए, ठीक ठाक शुरुआत। 7 पीसीपीएल ओवर्स के बाद 48 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई सुनील बुटोरिया और डॉक्टर चित्रांग ठाकर के माध्यम से। गेंदबाजी में अब टीम की गेंदबाजी का हुक्म इक्का, जिनके सर पे वो पर्पल कैप है। 2 मैन ऑफ द मैच के खिताब अपनी गेंदबाजी के बलबूते पे मिले हैं योगेश को। Welcome to Sadie. क्रिस की डेप्थ का इस्तेमाल किया, क्रिस की गहराई का इस्तेमाल किया। काफी पीछे गए सुनील।
50 रन से बन चुके हैं टीम एस चार्जर्स के लिए। थोड़ा सा उछाल, थोड़ा सा टर्न। योगेश वो अवसरों को बनाने में काफी माहिर है। 2 मैन ऑफ द मैच के खिताब मिल चुके योगेश को। काफी अच्छे फॉर्म में है, इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर है। Okay. As Shivals points out, at least 2 or 3 bowlers are at the same tally. But Yogesh Sharma has got that purple cap. That is on the basis of his average. Yogesh Sharma, Parminder Singh Bamra and Sam Kapadia, they were at the same number of wickets, 11 wickets each. On the basis of a better average, Yogesh is at the number 1 spot, number 2 Parminder and number 3 Sam. Yes, परमिंदर अगर विकेट लेता है तो आगे जाएगा, योगेश अगर विकेट लेता है तो वो अपनी जगह को और मजबूत बनाएंगे। कुल मिला के फायदा तो होगा टीम चैलेंजर्स को ही। No problem. ओह, चालुका ने चीत किया अपनी फ्लाइट और टर्न से। At the moment, Yogesh is having the upper hand. ये विकेट स्पिन गेंदबाजों के लिए काफी मददगार है। जब कभी कोई स्पिनर या कोई स्लो गेंदबाज बिजनेस एंड में गेंद को पिच कराता है और थोड़ी सा टर्न अगर मिलता है तो वो खेलना मुश्किल होगा। परमिंदर का स्पेल बरकरार रहेगा। योगेश और परमिंदर दोनों के ही खाते में 11 विकेट्स है। सैम कपाडिया जो कि दूसरी टीम के लिए खेलते हैं, उनके खाते में भी 11 विकेट्स है। बड़ी मजबूत जमीन पर है टीम चैलेंजर्स इस मैच में भी। 71 गेंदों में 128 बनाने हैं इस चार्जर्स को। Required run rate 10.82.
टीम चैलेंजर्स बहुत ही अच्छे जोन में है. Nobody's been able to challenge team challengers genuinely so far. चलिए मौका बना है. जेंसन एलईडी लाइट्स, गंदा रॉयल रिफाइनरी विकेट, स्टंप आउट होकर चित्रांग ठाकर पेविलियन में वापस आते हुए एक अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए. वाइड गेंद का इशारा तो हुआ है, लेकिन स्टंपिंग के रूप में आउट होकर डॉक्टर चित्रांग ठाकर पेविलियन में वापस. इस विकेट के साथ परमिंदर सिंह बामरा ने वो पर्पल कैप छीन ली है. योगेश शर्मा के सर से. अच्छे नजर आए चित्रांग, जो भी समय विकेट पे बिताया अच्छे नजर आए. सम्मानजनक इनिंग्स. That's a good knock. So he makes a statement that he's not going to be retiring anytime soon. He's got another at least 5 years of cricket left in him. So Parminder Singh Bamra with those 12 wickets, the highest wicket taker in this tournament. In comes the big man, the iconic player, GK. Gaurang is the kind of batsman who makes the art of batting look so soothing, pleasing to the eyes. Well bowled, well bowled. He's got the confidence with him. That spring in the stride, courtesy that wicket of Chitrang that is got. Jensen LED lights, Ganda Royal Refinery wicket. Score after 9 overs, a 54 for 4. The cream of the top order back in the pavilion. But they still have GK. Ajay Latte is all padded up. So is DJ. Things are looking quite rosy for team challengers. They have been leaps and bounds ahead of the rest of the lot. Teams like Warriors, Superstars, Blasters will be looking to come close to the form of team challenges, but the rest of the teams are a little too far behind to match challenges. Welcome to Sushil Gautam. What a terrific match yesterday. Team Gangsters losing a match which they had almost snatched out of the jaws of defeat. They were on the verge of a win. What a last over from Manish Sharma. Spot on. One brilliant piece of fielding by Sanjeev Mahajan that prevented the boundary for Karan Singh Walia, that turned the tide in the favor of team Superstars. Gangsters had cooked up a storm, courtesy that brilliant opening partnership from Avinash Mahinkar and Ashish Goel, and the follow-up, a big knock from Paji. No ways with that kind of an angle that you're getting. This is the last over before the drinks interval. The GSC staff team led by Siddhant tonight. In the absence of Priyanshu, Siddhant is the team leader.
Nice shot. Middling the ball. थोड़ा सा जल्दी अपने आप को कमिट किया था गौरांग ने. ड्रिंक्स इंटरवल 10 ओवर्स की समाप्ति के बाद 57 रन्स बने 4 विकेट्स के नुकसान पर. 46 minutes they have taken, 3 more than what team Welcome to Viveda Physiotherapy and Sports Rehab Clinic. We're here today for you. If you are an athlete or a person who is restricted in their daily life or their sport with pain or disability and not able to perform to your optimal level, don't worry. We won't stop you from playing. Cricket, tennis, squash, badminton, you name the sport and we got you. All your injuries under one roof. Last but not the least, painkillers पे नहीं, खुद पे विश्वास करो.
बहुत ही गहरी दोस्ती रखने वाले राजेश पटनी और पराग शाह का स्वागत है। बढ़िया शॉट, उस पर चौका लिखा हुआ है, रिदम मोबाइल्स चौका। प्लेसमेंट बहुत ही सटीक, सही वक्त पर बल्ले को खोला और जैसे ही वो गेंद कनेक्ट हुई, रिदम मोबाइल्स चौका मिलना था ही। थोड़ा सा दिशा से भटके और पर्पल कैप होल्डर ने चौका कंसीड किया। और एक अच्छा शॉट, कम से कम 3 रन तो मिलने चाहिए। तीन रन से लिखे हुए थे। पैंसठ रन बने हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 12.21, 56 में 114। इस शॉट को मास्टर किया है गौरांग ने, वन ऑफ हिज फेवरेट शॉट्स। ग्यारह ओवर्स के बाद 67 रन से 4 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा हवा में खेला था लेकिन नियंत्रण में थे, क्योंकि इनसाइड द सर्कल लेग साइड पर एक भी फील्डर तैनात नहीं है। जो 3 फील्डर्स मौजूद है लेग साइड पर, तीनों ही बिल्कुल सीमा रेखा पर तैनात। मलाड गोरेगांव वेस्ट की फिजाओं में GSC 45 प्लस T20 का नशा सर चढ़कर बोलता हुआ। 35वां मैच है, कल से और 12 गेम्स बाकी है, 12 मैचेस। गोल्डन प्लेट के 2 सेमीफाइनल्स और एक फाइनल, कुल मिला के 47 मैचेस।
that is in transit because of the backlog. It's going late, but it will reach you within 3 days. Hello. Yeah, I'll call you. Terrific shot. Comfort Group 6. Once again played with such a good intent. That will go crashing into the Rhythm Mobile's boundary fence. Gaurang Karakasia is playing his natural game. This is what he's made up of. The ball has enough wills on it to just about reach the Rhythm Mobile's boundary fence. A score after 12 PCPL overs, that's 85 for 4. 4 Jensen LED lights, Gandhar Oil Refinery wickets. Thank you to our title sponsor, Lakshmi Lila Group, a Praveen Kothari venture, physiotherapy partner, Veda Clinic, Dr. Vedika Jutani, Jensen LED lights, Gandhar Oil Refinery, PCPL, Comfort Group, Rhythm Mobiles, they are the co-sponsors. Over number 13 to be bowled by Saket, is it? Saket Adhikari. One more good hit, and I have always keep mentioning Yogesh Kotak has a knack for picking up those catches. That is straight into his belly. He's a showman. Jensen LED lights, Gandhar Oil Refinery wicket. In comes Pratik now to bat. वो पोज तब देता है योगेश जब अच्छे कैचेस लेता है. वो अपॉर्चुनिटीज हमेशा उसके पास आती है.
Good knock from GK. Nitin Ganatra walks out to the wicket. The left-handed Nitin. Oh, right up there in the block hole and is dismissed. Jensen LED lights Gandhar Royal Refinery wicket, the second of this over. Saket among some wickets as well now. That's an early dismissal for Nitin. He will be a little unhappy about it. Six wickets down for Ace Chargers. Now it's Pratik. The Saket is into his first over. He's already sent two batters back. Sunil on to 14 of 18 balls.
सिद्धार्थ गुहा को गेंदबाजी का मौका मिला है और एक विकल्प की आजमाइश करते हुए हेमंत मोहिते बिल्कुल मैच को अपने कब्जे में लिया हुआ है। अच्छा शॉट, नियंत्रण में थे, केवल दिशा दी, वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था। सटीक प्लेसमेंट, फलस्वरूप बहुत ही अच्छा रिदम मोबाइल्स चौका। क्लीन बॉल, वो गेंद केवल बेल्स को लेकर निकली। जेनसन एलईडी लाइट्स, गंदा रॉयल रिफाइनरी विकेट। थोड़े से अपने पोजीशन को छोड़ा प्रतीक ने। 7वें विकेट का पतन होता हुआ, 7वां जेनसन एलईडी लाइट्स, गंदा रॉयल रिफाइनरी विकेट। अजय लाट का आगमन होता हुआ विकेट पर। चौदहवें पीसीपीएल ओवर की एक गेंद बाकी है। 94 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। स्वागत है करण सिंह वालिया का, पाजी का स्वागत है, ऑरेंज कैप होल्डर। बहुत ही शानदार क्रिकेट मैच देखने को मिला कल। द बेस्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट सो फार, टीम गैंगस्टर्स एंड टीम सुपरस्टार्स। खराब गेंद थी, सही अंजाम तक पहुंचाया सुनील बुटोरिया ने। रिदम मोबाइल्स चौका। Spending good time at the wicket. Sunil is not throwing it away. He's put a price on his wicket. 34 balls and 81 runs required
14.29 the required run rate. That's been rightly called the no ball that slipped out of his hands. Hundred up on the board. Free hit. वो गेंद अच्छा शॉट, अथॉरिटी से खेला। योगेश के पार जाना मुश्किल है। एक रन की बढ़ोतरी होती हुई 31 गेंदों में 77 रन्स बनाने हैं। 31 balls and 77 runs to win the match with only 3 wickets in hand. $75 minutes is what they've taken to bowl those 15 overs. Taken too much of time to bowl those 5 overs, although they are on time. अपने दूसरे ओवर के साथ सिद्धार्थ रिक्वायर्ड रन रेट 15 के ऊपर है, 16 के घर में रिक्वायर्ड रन रेट। He's struck a good rhythm, Siddharth, into his second over. He's looking better. Welcome to the convener of the event and the owner of Panther Kings. That's Prasad Karkera. Now Shrivels will have to wait. He cannot go away.
Looking for that bouncer, but there was no pace in it at all. एक सौ सात पे सात औपचारिकता से हम इस वक्त गुजरते हुए अजीब और गरीब 16 के बाद 107। एक अच्छी इनिंग्स को अंजाम दिया है सुनील ने, किसी भी तरह से प्रेशर न लेते हुए अच्छा समय बिताया विकेट पर और अच्छे रन्स को भी हासिल किए हैं। वाईके की आजमाइश हुई है। आसान सा कैच साकेत के लिए, कोई गलती नहीं की। योगेश के हाथ सफलता लगती हुई। जेनसन एलईडी लाइट्स गंदा रॉयल रिफाइनरी विकेट। आगमन होता हुआ डीजे का 8 विकेट से गिरे हैं। एक अच्छा योगदान करके पेविलियन में वापस आते हुए सुनील भुटोरिया एक छोर पकड़ के रखा। फिर से एक बार जीत का परचम शायद टीम चैलेंजर्स के मत्थे लहराएगा। अभी तक किसी भी लिहाज से चैलेंज नहीं किया है किसी भी टीम ने चैलेंजर्स को। Required 120, 20 and over. अच्छी गेंद।
बहुत सारे विकल्पों को जमा कर लिया है अब टीम चैलेंजर्स के कप्तान और थिंक टैंक ने। हर तरह की स्थिति के लिए एक दो ऑप्शंस है। दे हैव दैट लग्जरी नाउ। After 17 overs, 1-1-2 for 8. Parminder Bamra comes back for his last over. The purple cap holder. बल्लेबाजी करने को नहीं मिली है इस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन गेंदबाजी के साथ अपना कारनामा कर दिखाया है। टीम चैलेंजर्स जैसी बढ़िया बैटिंग लाइनअप में अभी तक मौका नहीं मिला है। अब मौका मिलने का आसार भी बहुत ही कम है क्योंकि सभी बैटर्स बिल्कुल फॉर्म में है, लेकिन बड़ी शिद्दत से अपनी गेंदबाजी पर काम करते हुए और जो असाइनमेंट उन्हें दी जाती है गेंदबाजी को लेकर वो हर लिहाज से पूरे करते हुए हर असाइनमेंट को पूरा किया है और पर्पल कैप उनके सर पे है। Bowling too short and wide. He needs to pitch it further up. We're going through the motions. The result of the match is sealed in an envelope quite a long time back. Good knock from Sunil Bhutoria. Wide run. The unbeaten run for Team Challengers continues. It's a dream run that they are having in the tournament. It's almost like a fairy tale. Terrific cricket by Team Challengers. The team is playing like a symphony. Every player is contributing, and that is where they have been able to create magic. All the team players, even those who are not playing, those on the bench, they are also striking the right notes. And that is where the magic is coming from.
That one is for the galleries. Yogesh is always game for playing to the galleries. In any case, the ninth Jensen LED lights. Gandhar Royal the final wicket. With those wickets, maybe he will be in contention for the Player of the Match award. Definitely for sure. 60 plus and 2 wickets. Ashish comes in. The last wicket. एक 117 रन 9 विकेट के नुकसान पर. Wasted delivery. The last batting pair at the wicket. They are 9 wickets down. DJ on strike. A little bit of dew. Looks like it. Match number 35 coming to an end. After this, 12 more matches to come in the GSC 45 plus T20 League Season 7. Qualifier number 1 will be played between the number 1 and the number 2 teams. The eliminator will be played between the number 3 and the number 4 teams. The winner of the eliminator will play the losing team of the qualifier number 1. So obviously you got to get amongst the top 2 teams to have one more shot at going the distance. 5, 6, 7, 8, they're going to be playing the semi-finals for the Golden Plate Championship. Rhythm Mobiles boundary. क्या बात है. आशीष चोपड़ा हमेशा फील्डिंग में जान की बाजी लगाते हैं, बल्लेबाजी करने को मौका नहीं मिला है. आज मिला है आखिरी लम्हों में ये मैच. उन्नीस के बाद 125 बने हैं. आखिरी ओवर को लेकर योगेश.
4 गेंद बाकी है। सभी से निवेदन करूंगा जल्द से जल्द प्रेजेंटेशन एरिया में आए। It's going to be Prasad Karkher and Pramod Kashyap to be a part of the presentation ceremony. We have the purple cap to be given away. If he picks up a wicket here, it's going to be difficult. We'll have to look at the average. For what? Three balls left. Looks like it's going to be an early finish. All the stakeholders happy. यूट्यूब पर जुड़े हुए सभी क्रिकेट श्रोताओं का जीएससी क्रिकेट कमेटी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। 35वां मैच समाप्त होता हुआ। विकेट मिला। चलिए अब वो ऑरेंज कैप के लिए जद्दोजहद होगी, पर्पल कैप के लिए माफ कीजिए। अभिनंदन के पात्र बन चुकी है टीम चैलेंजर्स। 7 में से 7 जीत। किसी भी टीम चैलेंज करने के लिए भी तैयार नहीं है, नजदीक भी नहीं आई है। इतना शानदार क्रिकेट खेला है टीम चैलेंजर्स ने। चलिए, जिसके पास वो पर्पल कैप थी उन्हीं के पास रहेगी योगेश शर्मा। चलिए प्रेजेंटेशन एरिया में मिलते हैं। मैं निवेदन करता हूं हमारे कन्वीनर प्रसाद करकेरा को कि जल्द से जल्द आए। प्रमोद कश्यप।
What a terrific victory for Team Challengers, maintaining their dream run. It's time for me to invite Gaurang Karakasi on stage. Can we have a big round of applause for GK? Presentation party, we've got the convener of the event, Prasad Karkera and Pramod Kashyap. Hard luck, Gaurang, not the season you would like to remember. But yes, you've got a good team and you'll have to appreciate as this campaign comes to an end for you. All the guys put in their good effort. Ultimately, it didn't go in your favor. Yes, I would say that not a good season this year, boys. But I'm very happy looking at right from the first day of the match till today. All you guys, you are growing in your game. So that is a good takeaway. I hope you all continue practicing hard and improving upon your basics more. I think you all be a good cricketer. It was a good team to be with. All very friendly and very lovable people, and so it was a good experience for me also. There were a lot many takeaways, and hard luck, boys, but best of luck and big congratulations to challengers. They are a really champion team, and definitely not less than finals. I can see them like. Thank you so much. Thank you, GK. Yes, the players of team Ace Chargers, you all did not lack in that effort department. You all put in that best effort. End of the day, the season never turned up the right way for you, but you all were not lethargic. You all were not casual. You put in a good effort. So well done, guys. It's time for the winning team captain to come up on stage, Hemant Moite. He's having a dream run. Congratulations, Hemant Moite. Your dream run continues. One more emphatic victory. You guys have not been challenged so far. One good match, maybe before those big matches, you need one close match. That's right. But we had a couple of matches which went a bit close. At the outset, first, team Chargers. You initial 10 overs you bowled very well. It was quite a difficult thing for our openers to score off your slow bowlers. But Amit and YK, good batting. Good batting. We didn't take it very lightly. We went with a very serious approach. And even if Chargers had a depleted bowling side, they bowled very well. Okay. And then we followed up with Saket, Shri again, good batting. And our bowlers were excellent. Promo, Pawan, and we could test some of our bench also. Sid, good bowling. And YK. And that's a happy captain, a man in great touch. Hemant Moite is a hot property. Whenever you get Hemant Moite into your team, you can be assured of going the distance. So congratulations, that was one more very sweet victory. It's time for us to hand over the Player of the Match award. Player of the Match award goes to the showman, YK. 60 runs off 36 balls, 2 overs, 12 runs, 2 wickets and one very good catch as well. So YK, the Player of the Match. Yogesh, you're continuing with the good form. That's the most biggest positive that you're putting a price on your wicket. So well done. And in the field, you always get those catches. I think there is divine intervention. वो catches आपके तरफ आते हैं. गेंदबाजी करते हुए भी 2 बढ़िया wickets ली. All in all, everything falling in place for you. A terrific match for you. थैंक यू. मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है. कैप्टन कूल, हमारा भी कैप्टन कूल ही है मोहिते. उसने मेरे को सिर्फ कल रात को यही बोला, तू घर जाके एक्शन मूवीज देख, उसका इफेक्ट यहाँ दिखाई देगा. और थैंक यू मोहिते, मेरे को अच्छा खेला मैं. थैंक यू. नहीं, वो दैट इज सीक्रेट.
नो थैंक यू योगेश जब कभी होते never a dull moment when he's around. With this we come to an end of match number 35. Tomorrow match number 36, Team Warriors and Panther Kings. I'm sure Prasad Karkera and his team are geared up for that match. This is your host and host Nishat signing off for the moment. Thank you, good night, God bless. See you tomorrow at 6:30 p.m. with the toss.